it's about an acid reacting with a carbonate and then a gas being produced, being collected. So basically, you would have seen this question carefully. Here you see that the calcium CaCO3, it's limestone, it's calcium carbonate, which is reacting with HCl, giving you calcium chloride, carbon dioxide, water, neutralization reaction. The student investigates the rate of this reaction at 3 different temperatures using the apparatus shown. In each experiment, the student adds dilute hydrochloric acid to an excess calcium carbonate. Mind it that calcium carbonate is an excess. It means इस reaction में hydrochloric acid खत्म होगा तो reaction खत्म हो जाएगा. What is meant by an excess of calcium carbonate? It means that calcium carbonate will be left at the end of reaction, isn't it? Yeah, you can say it's more than enough needed to react with HCl. So we can say calcium carbonate is more than enough needed to react with HCl, and it will be left behind. Is that so? Excess, right? जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, but it should be defined. सर अगर हम लोग लिखें it will be left behind, तो ये सही हो जाएगा? Yes, absolutely. Sir? Yes. Sir, please आप कल की और आज की क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भेज देंगे, मेरे इंटरनेट पे बहुत मसला है आज. Okay, बच्चा. Sir, अगर more than HCl लिखें. Explain. अगर क्या लिखें? In relation to the other reactant. More than HCl. हाँ, that's fine enough. सर आपने वो पेपर नहीं भेजा. Name the two pieces of apparatus A and. सर वो संडे को पेपर आपने कराया था ना, वो आपने नहीं भेजा ग्रुप के अंदर. हाँ, okay. But I'll share the video of the complete paper otherwise. And B, okay. I think A is a conical flask and B is a gas syringe. So A is actually conical flask and B is gas syringe. Part C. The student does experiment 1 at 20. Name a piece of apparatus that can be used to keep the temperature constant. I think you remember water bath, or you can say thermostatically controlled water bath, or simple water bath will also suffice. वैसे आपको पता ना कि high the temperature, high the rate होता है. You increase the temperature, so the particles gain energy and they collide more frequently, and the frequency of effective collisions increases and rate increases, by the way. लेकिन आई थिंक जब आप जस्ट फॉर अ कॉमन थिंग ताकि ब्रेन में आपके रहे, अगर यहाँ पे हम okay, so basically we have some questions. Do we need to write graduated syringe? No, there is no need to write graduated syringe. अगर आप लिख दें it's fine, लेकिन the word gas syringe is very important. So I wrote that calcium carbonate is more than the solvent, so is it wrong? All apparatus are very important, Taha. Can it Bunsen burner? No, Zainab, it cannot be Bunsen burner क्योंकि Bunsen burner से आप जो temperature constant नहीं रख सकते. उसने कहा है कि temperature आपने constant रखना है. तो temperature constant रखने के लिए you need to have water bath कह लें या electrostatically controlled water bath. I mean thermostatically controlled water bath. या water bath कह दें या फिर like a thermostatically controlled water bath कह दें. It is how you can keep the temperature constant. You can't use Bunsen burner. Why? Because Bunsen burner would not keep the temperature constant. Electric heater भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने temperature constant रखना है. Yes, Zainab. You say calcium carbonate is high in. No, Daniel.
Again, we write volumetric flask instead of conical flask. No, beta, this is conical flask. This is not volumetric flask. If you write volumetric flask, it will be wrong. Particles gain energy and they collide more frequently, and the frequency of effective collisions increases and rate increases, by the way. लेकिन I think जब आप just for a common thing, ताकि ब्रेन में आपके रहे, अगर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि how the temperature affects rate, तो मुझे बाकी factors affecting rate should be kept constant, क्या नहीं? यानी कि concentration of HCl and size of calcium carbonate, because calcium carbonate is actually a solid. Just for information. Now, the student does two more experiments at 40 and 60. Suggest two variables that the student keeps constant. That temperature is the only variable that affects the reaction. आगे ना बात. So guys, it is concentration of HCl and its actually particle size or surface area of calcium carbonate. The student plots a graph of the results. I go back and I'll tell you again. सर ये इसमें पार्ट डी में हम और भी लिख सकते हैं, कैटलिस्ट वगैरह भी लिख सकते हैं ना? नहीं मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल दोबारा. देखें उसमें एक सेकंड देखें, वो कह रहा है आपको the student does two more experiments, experiment 2 at 40 and experiment 3 at 60, right? Now suggest two variables that student keeps constant so that the temperature is the only variable that affects the rate of reaction. आप देखें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो you can't say catalyst क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप कैटलिस्ट नहीं होता, ठीक है? अब आप याद करें कि which factors affect rate of reaction. कौन से factors rate of reaction को affect करते हैं? एक temperature, एक pressure, एक concentration, एक size of particle और एक catalyst. यहाँ पे pressure आ नहीं सकता क्योंकि gases नहीं है reactants में. यहाँ पे catalyst possible नहीं है, why? Because it's a neutralization reaction. बातें आएंगी या temperature की या concentration या size of particle की. अब variable जो under experiment है वो temperature है. So बाकी कौन से दो factors बचे जो rate को affect कर सकते हैं? वो concentration of size of particle होगा ना? जी सर. So it is how you have to think. सोचने का ये तरीका है. आपको वो चीज रिकॉल करनी है जो कि रेट को अफेक्ट करते हैं. यू कांट से अमाउंट ऑफ नहीं बेटा इमान, यू कैन नॉट से अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. मुझे आप ये बताएं, मुझे आप प्लीज बताएं, जब आप लोग 5 फैक्टर्स पढ़ते हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, क्या आप उसमें लिखते हैं जो मोल्स, क्या आप उसमें लिखते हैं मैस ऑफ सॉलिड? बताएं, क्या मोल्स फैक्टर है, क्या मैस फैक्टर है अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? चले, क्या वॉल्यूम ऑफ HCl फैक्टर है अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? 5 फैक्टर्स तो याद रखें ना. इन 5 फैक्टर्स के बियॉन्ड हमने आपको अगर आज तक फैक्टर नहीं पढ़ाया, इस मतलब इन 5 फैक्टर्स के बियॉन्ड कोई फैक्टर नहीं है. तो यू हैव टू रिमेंबर एंड रिकॉल द नॉलेज ऑफ द सिलेबस एज वेल एट द सेम टाइम, राइट? एनीथिंग यू राइट beyond concentration of HCl and particle size of calcium carbonate will be considered absolutely wrong. There we go. Right? ये 3 ग्राफ दिए हैं. आपने कि जितना ग्राफ स्टीप होगा उतना रेट ज्यादा होगा, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे टाइम होता है तो ग्राफ का ग्रेडियंट इज रेट, राइट? इट्स क्वांटिटी ओवर टाइम, इट्स रेट. So I think steeper the gradient, greater the rate actually. Part 1. Describe how the graphs are used to decide which experiment has the fastest rate. So I think that I think steeper the gradient, है ना? और faster the rate, या जो जल्दी खत्म हो जाए, level off कर जाए. तो I can say that steepest gradient explains the fastest rate. Write a number in each box in the graph to identify the experiments 1, 2 and 3. So it's like this. It's 3, 2, 1.
क्योंकि experiment 3 में we had the highest temperature, it was 60. Experiment 2 में we had 40, and in experiment 1 we had actually 20. Isn't it? So it means that K3 has the highest rate, steepest gradient. State how the graph shows that the reaction stops. How the graph levels off, or the graph becomes horizontal. So we can say the graph becomes horizontal after some time. Why does the reaction stop? Because all HCl has reacted, or hydrochloric acid has been used up. So HCl has been used up. You have to read the question very carefully. Why? Because he's already told you that calcium carbonate is in excess. This means that the reaction will stop when HCl will be used up, by the way. जी मनान Was that so? सर हम सिर्फ लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सही होएगा? ठीक, that's fine. ओके सर एक आपसे एक सवाल था जी जी सर, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप है? स्टीप का मतलब क्या होता है? सर इट्स माय क्वेश्चन. हाँ हाँ बोलो बोलो. नो आइडिया सर, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. ओके सो बेसिकली वॉल जो ना वॉल जो वॉल होती है जो कि यू नो आपके फ्लोर के 90 डिग्री पे होती है. वॉल इज द स्टीपेस्ट थिंग वी हैव इन अर्थ. यानी कि बिल्कुल अपराइट. इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं इसका एंगल डिक्रीज करता रहूं वॉल का, राइट, विद द फ्लोर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लेस स्टीप हो जाएगी. और अगर वॉल और फ्लोर एक ही लेवल पे आ जाए तो उसकी स्टीपनेस खत्म हो जाएगी. तो स्टीपनेस इज द अपराइटनेस ऑफ अ लाइन और अ ग्राफ. ओके, सो यहां पे अगर आप देखें तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट जो आपका 3 है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट 3 देखें आप, ठीक है, उसकी इनिशियल लाइन इज द स्टीपेस्ट वन, मोस्ट वर्टिकल. तो जो लाइन मोस्ट वर्टिकल होती है इट इज द स्टीपेस्ट, एंड देयरफॉर इट विल हैव द हाईएस्ट ग्रेडियंट, बिकॉज y2 माइनस y1 बहुत ज्यादा होगा लेकिन x2 माइनस x1 बहुत कम होगा. तो y by x is gradient, or you can say slope of the graph, right? So steeper the graph, more the gradient. और अगर x axis पर time हो, so I mean that gradient is great, by the way. So do I make sense? राइट सर, थैंक यू. No problem. सर अगर x एक्सिस की जगह पर y एक्सिस पर होगा टाइम, या फिर बाद में टाइम है ही नहीं, तब क्या होगा सर? अच्छा, अगर तो टाइम है ही नहीं ना x axis, तो फिर उस ग्राफ का ग्रेडियंट रेट नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है ग्रेडियंट. लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर x पे टाइम हो तो फिर ग्राफ का ग्रेडियंट रेट होता है. अगर टाइम नहीं है फिर रेट भी नहीं है ग्रेडियंट. फिर तो वो तो फिर डिपेंड करेगा कि एक्सिस क्या है, उसका y by x ग्रेडियंट होगा. ग्रेडियंट असल में रेशियो होती है ना y रेशियो x की. ग्रेडियंट तो y रेशियो x की रेशियो होती है, और अगर x पे टाइम है तो y रेशियो टाइम इज रेट. एनीथिंग ओवर टाइम इज रेट. सर जी सर हम सेकंड लास्ट पार्ट में लिख सकते हैं ग्रेडियंट इज 0. स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन स्टॉप. देखें पार्ट 3 को बहुत ज्यादा आपने इसको केयरफुली पढ़ें प्लीज, ठीक है. पार्ट 3 बहुत केयरफुली पढ़ें. तो पार्ट 3 में वो कहता है स्टेट हाउ द ग्राफ शोज द रिएक्शन स्टॉप्स. तो आपने बताना कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया, ग्राफ फ्लैट हो गया. आप ये नहीं लेके आप लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि CO2 नहीं बन रही, राइट? नो, ग्राफ क्या बता रहा है, तो ग्राफ की शेप देख के बताएं मुझे. तो ग्राफ फ्लैट हो गया है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है, मुझे पता है रेट 0 हो गया है, मुझे पता है CO2 निकलना बंद हो गया है, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है? क्योंकि आपको पता इसलिए चल रहा है क्योंकि ग्राफ फ्लैट हो गया, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया. तो मुझे वो वाला रीजन चाहिए. आई होप आई मेक सेंस. ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता. सर ग्रेडियंट कहा था सर मैंने, ग्रेडियंट. अच्छा, ग्रेडियंट बिकम 0, हाँ चलो वो ठीक है, लेकिन रेट मत लिखें क्योंकि रेट तो उसकी फाइनल कंक्लूजन है.
Thank you, sir. अच्छा वैसे बाय द वे, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं अपनी तरफ से कि मुझे रेट टाइम ग्राफ में ये वाले ग्राफ्स कन्वर्ट करते हैं, ये 3 ग्राफ मुझे रेट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर दें, चलिए शुरू हाउ हो विल जाए यू डू प्लीज, दैट? क्विक। स्टार्ट। सर जी बच्चा। सर रेट ऑफ रिएक्शन जब चैप्टर हम कर रहे थे तो आपने लाइक हमें एक कंपेयर करना सिखाया था, तो मुझे समझ तो आ गई थी कि रेट कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, पर वो जो मोल्स वाली आप बात कर रहे थे और ग्राम्स में बात करते थे वो मुझे इस बात समझ नहीं आई। हमेशा याद रखो जो ग्राफ जब आपने लेवल ऑफ करते हैं ना, तो जी जो सर। ग्राफ की जो लेवलिंग ऑफ है वो डिपेंड करती है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पे, ठीक है? तो मोल्स हमने वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन से निकाले हमेशा। हाँ, यस यस, वो मोल्स पे डिपेंड करेंगे। और जो ग्राफ की स्टीपनेस है वो डिपेंड करेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। स्टीपनेस इज रेट, और फिर जो लेवलिंग ऑफ इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी है वो डिपेंड करेगी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। मोल्स का डिफरेंस देखना है। यस, ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। क्विक गाइस प्लीज। जी डन। तो मेरा तो एक्सपेरिमेंट 3 का रेट हाईएस्ट है, तो ये एक्सपेरिमेंट 3 जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसी है ना, क्योंकि एट टाइम 0 द ग्रेडियंट इज स्टीपेस्ट, रेट इज फास्टेस्ट एट टाइम t इज 0। ठीक है, तो आप इन्हें कनेक्ट कर दें। एक्सपेरिमेंट का रेट ज़रा कम है, तो देर बाद खत्म होगा 2, तो आप इनको भी कनेक्ट कर दें आपस में। और एक्सपेरिमेंट 3 जो है उसका रेट और कम है इनिशियल, वो खत्म ही बहुत देर बाद होगा। ओहो, वो खत्म ही बहुत देर बाद होगा, है, तो आप इसको भी कनेक्ट कर दें। So I think that the graph should look like this. The volume time graph, if converted into rate time graph, the graph should look like this. Is that so? Let's see the next question. Okay, this was interesting. It was actually designing of an experiment, which I have already been discussing with you in my sessions, that the designing of experiments is a very important aspect of both IGCSE and O-level, right? Isliye lectures are very important when going on. It says carbon and copper 2 oxide both are black solids. So carbon is a black solid, copper oxide is a black solid. Copper 2 oxide reacts with sulfuric acid and forms an aqueous solution. तो copper 2 oxide जो है वो तो रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि आपको पता है मेटल ऑक्साइड है, लेकिन जो कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। नाइदर कार्बन नॉर कॉपर ऑक्साइड dissolve in water. So basically, just to add some information on the side, so copper oxide plus sulfuric, he is saying it's a reaction. Carbon plus sulfuric, he says it's no reaction. He says copper oxide को ऐड करें पानी में, it does not dissolve, ठीक है, और अगर कार्बन को ऐड करें पानी में तो it does not dissolve. तो मेरे ख्याल से ये वो आपको सेपरेटली इंफॉर्मेशन दे गया. This is the first information he gave you, this is the second information he gave you, and this one is the third information he gave you. अब हम बातें करते हैं कि वो चाहता क्या. वो कहता है मिक्सचर कंटेन्स कार्बन कॉपर 2 ऑक्साइड ओनली. ये मिक्सचर आपके पास अवेलेबल. Plan an experiment to produce a pure sample of carbon from the mixture. You may use sulfuric acid, distilled water, and any practice. ठीक है. Your plan should include the details of how to dissolve copper oxide in sulfuric acid, how to separate carbon, how to purify carbon, and observation made during each step of the process. The chemical equations are not required. Right?
वैसे ये एक्सपेरिमेंट रीड करके हमें वो नहीं याद आता एक्सपेरिमेंट जो डिजोल्विंग फिल्ट्रेशन एवेपोरेशन का, जो हम आपको जनरली पढ़ाते हैं कि अगर मेरे पास सॉल्ट और सैंड का मिक्सर हो, ठीक है, तो मैं उसको पानी में उसको डिजोल्व करता हूँ, सॉल्ट डिजोल्व कर दिया पानी में, सैंड रिमेन्स इनसॉल्युबल, सैंड को हम फिल्टर करते हैं, ड्राई करते हैं, सॉरी वॉश करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। भाई यहाँ भी तो वही है, इस कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, बस आपने इनको पानी में डालना, हम इसको सल्फ्यूरिक में डाल देते हैं, तो कॉपर से उसमें डिजोल्व कर जाएगा। ट्रू। तो बेसिकली you add the solid mixture to acid and stir. Add solid mixture to the acid and stir. जब stir करेंगे तो copper oxide dissolve कर जाएगा और जो carbon है it will remain insoluble. So we can say copper oxide reacts and dissolves, whereas carbon remains insoluble. Right? फिर बाद में आप फिल्टर ऑफ कर दें कार्बन को, filter off carbon and obtain blue solution of copper sulfate. कि उसने कहा है कि ऑब्जर्वेशन बतानी है जो होती है, right? Then filtered carbon is washed with distilled water and dried in folds of filter paper. I think you scored 5 marks. How to dissolve आपने लिख दिया, ठीक है. How to separate carbon हो गया, how to purify carbon हो गया, and observation हो गई, right? So by the way, how have you scored the mark? तो आपने कहा add the solid mixture to the acid and stir. तो stir करना पड़ेगा आपको. Stir is important, right? 1 mark. Then second mark is कि आपने फिर इसके बाद filter off किया carbon को, ठीक है. Blue solution आपने obtain किया as filtrate. Carbon आपने wash किया, ठीक है. Carbon washed और फिर carbon dried in folds of filter paper. So you've scored 5 marks. So that's how you have to do it. और ये इसका आपका thinking process भी है. So thinking process का improve होना is actually more important rather attempting a question in my point of view. यहाँ पे Right. current लिखने आपने, क्योंकि उसने कहा है कि observations लिखनी है. Okay. Yes, you can use the word mix as well. If some lines are empty, all points have been covered. No, Zainab. So let's see the next question. Here we are. So guys, this question is more like identification of ions, right? A student is provided with 3 solutions: zinc sulfate, copper sulfate, and calcium nitrate. ठीक हो गया? The student tests 3 aqueous solutions by adding each reagent shown in the table. Record the observation in the table. Write no reaction where appropriate. Great. Let me know, Amin, when can I move on? then से आप move करते हैं. Right? A student is provided with 3 solutions: zinc sulfate, copper sulfate, and calcium nitrate. ठीक हो गया? The student tests 3 aqueous solutions by adding each reagent shown in the table. Record the observation in the table. Write no reaction where appropriate.
Great. Obviously, I hope you remember aqueous sodium hydroxide and aqueous ammonia are added to test for cations, by the way. और ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? टू टेस्ट फॉर कैटाइंस. वाई वी आर एक्चुअली बेरियम नाइट्रेट, ये क्यों ऐड करते हैं? ये हम ऐड करते हैं टू टेस्ट सल्फेट. इट्स टेस्ट फॉर सल्फेट. Aluminium plus aqueous plus heat, now that is the test for nitrate. ये बातें ब्रेन में बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? सो बेसिकली अब देखते हैं कि जिंक सल्फेट. नाउ इफ आई ऐड aqueous NaOH, now it's actually drop wise, तो white PPT आएगा. You add an excess, so it's soluble, isn't it? तो यहां पे white PPT, you add excess, तो PPT is soluble in excess. You add aqueous barium nitrate, अब इसमें सल्फेट है, तो आई थिंक इट विल गिव यू white PPT. और मेरे ख्याल से ये टेस्ट नाइट्रेट का नाइट तो है नहीं, तो आई थिंक इट्स नो रिएक्शन, राइट? तो इट्स नो रिएक्शन. Aqueous copper sulfate now. You add aqueous NaOH, तो I think it's blue PPT. You add excess, तो PPT insoluble, isn't it? Add aqueous barium nitrate, sulfate इसमें भी है, तो I think it's white PPT. Since there is no nitrate, तो यहाँ पे there is no reaction. So chemistry knowledge को understand करना बहुत ज़रूरी है. Aqueous calcium nitrate with aqueous NaOH, I think it's white PPT. With excess, I think it's insoluble, right? And barium nitrate, अब इसमें कोई सल्फेट नहीं है, so I think there is no reaction. हाँ, अलबत्ता जब आपने एल्यूमिनियम और ये ऐड किया NaOH और हीट, तो भाई यहाँ से अमोनिया गैस निकली होगी, अलबत्ता ज़रूर, राइट? सो नेम ऑफ गैस इज अमोनिया. और टेस्ट फॉर गैस इज एक्चुअली लिटमस पेपर. damp red litmus paper. Result of test, it turns blue. Because ammonia is a basic gas. And guys, you scored 10 marks, man. Smiling face. That's how you do it. So basically, I think the most important information was this. Oh, sorry. Was this. The test of cations, the test for sulfate, the test for nitrate. So your approach to the question should be actually amazing. Okay, let's see the next question. So guys, it's quite an interesting question again. It's the reaction of zinc with iron 2 sulfate and the temperature of the mixture increases. यानी कि this reaction is exothermic, it means that. आपने zinc add किया iron sulfate में, zinc sulfate मिला plus iron. Because I hope you remember that zinc is a grey-black solid and iron is a brown solid. Part A. A student transfers 25 cm cube 2 mole per dm cube iron to sulfate into a beaker. ठीक है, आपने let's say आपने beaker बना लेते हैं. तो एक beaker में G, can I go on, Manu? this reaction is exothermic, it means that. आपने zinc add किया iron sulfate में, zinc sulfate मिला plus iron. Because I hope you remember that zinc is a grey-black solid and iron is a brown solid. Part A. A student transfers 25 cm cube 2 mole per dm cube iron to sulfate into a beaker. ठीक है, आपने let's say आपने beaker बना लेते हैं. तो एक beaker में आपके पास पड़ा है 2 mole per dm cube and 25 cm cube
FeSO4. And the temperature of the solution is 22 degrees Celsius. ठीक हो गया? Now, the student then adds excess zinc. हमने इसके अंदर excess zinc डाला है. Excess. यानी कि iron 2 खत्म हो जाएगा. Adds excess zinc to iron sulfate and starts a timer. The student stirs the mixture with a thermometer. इसके अंदर उसने thermometer dip किया हुआ है. ठीक है? And measures temperature at 1 minute interval. And after every minute, he notes the temperature. You can see the table. आप यहाँ पे टेबल देख लें. Isn't it? As soon as the zinc is added to iron sulfate, the temperature of the solution starts increasing. What can you deduce about the reaction from this information? The reaction is exothermic, guys. It's exothermic. Why do the temperature readings in the table decrease from 1 to 6 minutes? Right? endothermic नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आई थिंक रिएक्शन ख़त्म हो गया जैसे ही आपने उसको मिक्स किया. ठीक है, रिएक्शन वॉज वेरी फास्ट, विगरस था, ख़त्म हो गया. उसके बाद सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है. आई थिंक रिएक्शन हैज़ फिनिश्ड एंड सोल्यूशन इज कूलिंग डाउन. सो रिएक्शन हैज़ finished and the solution is cooling down. Part 3. If the student had continued to measure the temperature after 6 minutes, suggest the lowest temperature that would be reached. तो lowest temperature क्या reach होता? So I think interesting है. Lowest temperature क्या होगा? जहाँ से आपने start किया, जहाँ पे temperature start पे था, I think it's 22. Isn't it? क्योंकि आपका 22 तो initial था. ये तो रूम टेम्परेचर है, इससे लो तो नहीं हो सकता. स्टार्ट ही हमने आज किया तो खत्म इधर ही होना है टेक्निकली. तो आई थिंक इट्स 22. इसमें सर दैट्स सो. सर पार्ट 2 फिर से एक्सप्लेन करते हैं. वो कहते हैं why did the temperature reading in the table decrease from 1 to 6 minutes? क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट में ही खत्म हो गया था. इतना फास्ट रिएक्शन है. जैसे ही आपने मिक्स किया, देखो ये सारे रिएक्शन तो फास्ट होते हैं. ये डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, बस सारे रिएक्शंस फास्ट हैं. रस्टिंग स्लो रिएक्शन है बस. जैसे ही आप रिएक्टेंट्स मिक्स करेंगे, वो रिएक्शन एकदम अकर करेगा, खत्म हो जाएगा. अब उसके बाद तो सही बात है, आप टेम्परेचर ड्रॉप ही करना है. अब सोल्यूशन ठंडी हो रही है, रिएक्शन हैज फिनिश्ड, द सोल्यूशन इज कूलिंग डाउन. आप ये नहीं कह सकते कि आयरन 2 सल्फेट इज रनिंग आउट और ये एनर्जी रिलीज इज डिक्रीजिंग. इट्स रॉन्ग. रिएक्शन तो स्टार्ट जैसे ही आपने जिंक उसके अंदर ऐड किया आयरन सल्फेट में, एकदम रिएक्शन हुआ और खत्म हो गया. ओके थैंक यू. सही रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 22 था ना बच्चा, और इनिशियल था 22, तो जो फर्स्ट टेम्परेचर आया वो 31.6 नहीं आया. इनिशियल टेम्परेचर वाज 22 ऑफ आयरन सल्फेट. जब हमने जिंक ऐड किया तो 31.6 हो गया. इसका मतलब है हीट निकली, रिएक्शन एक्सोथर्मिक था. फिर उसके बाद वो डिक्रीज किया है, क्योंकि रिएक्शन जैसे ही आपने मिक्स किया कंटेंट्स को, रिएक्शन शुरू और खत्म हो गया. इतना फास्ट रिएक्शन था. सही है. तो इंक्रीज नहीं किया स्टार्टिंग पे टेम्परेचर, तो ये तो एंडोथर्मिक होना चाहिए. मेरा बच्चा, आप 10 दिन बाद पेपर देने, जब सोल्यूशन आप गर्म हो जाए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. सोल्यूशन सराउंडिंग की एग्जांपल है. एंडो कहां से हो गया? सोल्यूशन तो गर्म हो रही है. सोल्यूशन तो 22 से 31.6 चली गई है. सोल्यूशन तो हीट अप हुई है. सोल्यूशन सराउंडिंग की एग्जांपल है. सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करे तो एक्सोथर्मिक, अगर डिक्रीज करे तो एंडोथर्मिक. ये भूलनी नहीं बात प्लीज. ओके
22. Is that so? Let's move on. So now he says that can plot the results in the table in the grid, draw a straight line of best fit बनाएंगे हम, यानी कि equal scattering of points, extend the line until it actually intersects y-axis. Let's draw the graph. So guys, here is the graph I've plotted for you, और मैंने इसको जरा intersect भी कराया y-axis के ऊपर, ठीक है? Now it says that on the grid, draw a circle around the anomalous point. So I think this one is your anomalous point. वैसे ये anomalous point आया क्यों है? Let's focus करें experiment पे. If I ask you the reason, ठीक है? What's the reason that why this anomalous point rose actually? तो मेरे ख्याल से कि जब उसने जिंक डाला आयरन सल्फेट में तो उसने स्टॉप वॉच शुरू कर दी. रिएक्शन एकदम हो गया, खत्म हो गया, फिर टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू कर दिया. तो यानी कि एवरी नेक्स्ट टेम्परेचर इज़ लेसर, ऐसी है ना कि सोल्यूशन ठंडी हो रही है. तो क्या पता एट द थर्ड मिनट, राइट, यानी कि ये नॉर्मल पॉइंट क्यों आया है, ये थर्ड मिनट पे आ रहा है, ये वैल्यू टेक्निकली असल में कम होनी चाहिए थी ना, लेकिन ज़्यादा आ रही है. मतलब है क्या पता कि उसने ये टेम्परेचर 3 मिनट्स अभी हुए ना हो और उसने पहले नोट कर लिया हो, isn't it? So we can say that the reason will be that the temperature reading was taken before 3 minutes, right? And before the third minute. 2.5 मिनट्स पे क्या होगा बेसिकली, तो आई थिंक निकाल लेते हैं. 2.5 इज हेयर, तो आई थिंक दैट इट्स मोर लाइक हेयर. तो ये तो हो गया 29.246, तो आई थिंक इट्स 29.6. Is that so? Now, part 2. Use a graph to determine the time after which the temperature of the mixture would be 30. यानी कि हमने वो टाइम बताना है जहाँ पे ये 30 हो जाए. तो बेसिकली ये 30 है, तो यहाँ पे आ रहा है रफली, I think it's 2.2 minutes. So I think it's 2.2 minutes. Okay. D part 1. Use your graph to determine the temperature of the mixture at 0 minutes. This figure represents the maximum temperature that the mixture reaches in the reaction. यानी कि जब आपने reaction शुरू हुआ तो rate was maximum, तो temperature maximum हुआ होगा. तो यानी कि y-intercept note कर लेते हैं. तो what's the y-intercept here? So it's approximately 32, or you can say 33, इधर आ जाता है. तो you can say 32.4689. You can say 32.9 डिग्री सेल्सियस, और 33 भी ठीक है, बट मेरा आ रहा है 32.9 डिग्री सेल्सियस. The initial temperature of the aqueous iron sulfate was 22. Calculate the maximum temperature rise after the zinc is added. तो आप इसको माइनस कर दें, isn't it? So basically 32.9 minus 22. So the answer is 9 minus 22. It's 10.9. ये temperature rise आया. Is that so? Maximum temperature minus initial temperature. Now, it's part E. The student uses 25 cm cube 2 molar iron sulfate and an excess of zinc. Calculate number of moles of iron sulfate. So I think moles equals to concentration to volume. So it is 2 into 25 divided by 1000. Right? I think the answer is 0.05 moles. फिर part 2 में कहता है the heat produced in the reaction in kilojoules per mole is calculated using the expression shown.
I think put the values and find the answer. So I think heat produced will be equal to 25 into 4.2 into maximum temperature rise is 10.9, or 1000 into moles of this is 0.05. So I think the answer will be 25 into 4.2 into 10.9 divided by 1000.05. So I think the answer is 22.9. So it is 22.9. Again, since reaction is exothermic, right? So I mean heat निकल रही है ना, तो I think it's, you can say, negative 22.9 as well. सर अगर हम ये नेगेटिव साइन ना, उसने वैसे कहा नहीं है कि साइन साथ लगाएं. क्या कह रहे हैं? सर आपने उसका जवाब दे ही दिया इस वीडियो में. Okay. But then I think the reaction is perfectly exothermic in nature, so I think it's worth adding this sign. So guys, I hope that you got some information how to solve these questions, right? The fact is not answering the questions, the fact is the approach to the question should be correct, right? So we have to make the approach clear, because if any question comes on on the way, we should be able to tackle it, right? So guys, I wish you best of luck. I hope you were enjoying, and this was happy learning. एक्सक्यूज मी सर. जी बच्चा. सर थोड़ा रिवाइंड कर दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. कहाँ से? सर ये लास्ट 2 क्वेश्चंस बस. Last 2 questions के 2 parts. 2 पार्ट्स सर वही. ठीक हो गया. I go like this. Okay. Is that so? Maximum temperature minus initial temperature. Now, it's part E. The student uses 25 cm3 2 molar iron sulfate and an excess of zinc. Calculate number of moles of iron sulfate. So I think moles equals to concentration to volume. So it is 2 into 25 divided by 1000. Right? I think the answer is 0.05 moles. फिर part 2 में कहता है the heat produced in the reaction in kilojoules per mole is calculated using the expression shown. I think put the values and find the answer. So I think heat produced will be equal to 25 into 4.2 into maximum temperature rise is 10.9, or 1000 into moles of this is 0.05. So I think the answer will be 25 into 4.2 into 10.9 divided by 1000.05. So I think the answer is 22.9. So it is 22.9. Again, since reaction is exothermic, right? So I mean heat निकल रही है ना, तो I think it's, you can say, negative 22.9 as well. सर मेरा आंसर आ रहा है 23 पॉइंट. उसने वैसे कहा नहीं है कि साइन साथ लगाएं. नहीं सर मेरा आंसर आ रहा है 23.1. वो भी सही होगा. 23.1. अच्छा खासा डिफरेंस है. इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होता. सर मेरा थोड़ा सा वो था ना, मेरा डी पार्ट का 33 आया था, डी सेकंड का 11 आया था, उसके बाद फिर मेरा टेम्परेचर राइज का सिर्फ फर्क था 0.1. अगर बेसिकली इतना फर्क आ जाए ना, तो हम यहाँ मार्क नहीं करते हैं, फिर मार्क वहां काटते हैं जहां पे आपने ग्राफ से रीडिंग ली होती है. कोशिश करें कि ग्राफ एग्जैक्ट बनाए. 0.1.2 का फर्क से इट डजंट मैटर, लेकिन अगर फाइनल वैल्यू बहुत दूर चली गई फिर हम नंबर काटते हैं. सर अगर माइनस ना लगाएं फिर, अगर क्या है, अगर माइनस ना लगाएं फिर सही होगा आंसर? नहीं बेटा, इट विल बी रॉन्ग. क्योंकि देखो ये नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव इसलिए. अच्छा आप कह रहे हैं कि यहां ना लगाएं नेगेटिव वैल्यू. हाँ इट्स फाइन, लेकिन वैसे नेगेटिव क्यों है? व्हाई? बिकॉज़ द रिएक्शन इज एक्सथर्मिक. सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो सराउंडिंग का टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, तो फिर हम नेगेटिव साइन क्यों यूज करते हैं? नेगेटिव का मतलब ये है कि सराउंडिंग टेंपरेचर इंक्रीज करके हीट निकली है. हीट निकली है तो टेंपरेचर इंक्रीज किया ना सराउंडिंग का. नेगेटिव का मतलब है केमिस्ट्री में हीट इवॉल्व हुई है, और जब हीट इवॉल्व होगी तो टेंपरेचर सराउंडिंग का इंक्रीज करेगा.
Right, sir. Okay. So guys, I hope you're all clear. I'll share one more paper with you today. Please make sure you do it again, and then of course we'll discuss it tomorrow. Until then, keep smiling and keep shining. This was Happy Learning, guys. Please take care.